IITian, could you share with us how your journey in the arts began and what inspired you to dedicate yourself to the promotion of Indian art forms and create SPIC MACAY? Hello, yeah. First of all, before answering any question, I'd like to thank, of course, Sachin ji and Prajakta ji and Ankita ji for having invited me here, and all the teachers who are here, Deepa and others who have made it possible for me to come and interact with you. Your students gave such a lovely presentation, and that itself is an indication of your school. It gives an inkling of what your school is like. I'm very happy to be here, and as I said, may many more children learn our wonderful classical arts, our music, our dance, our percussion. And now to answer your question, we are all attracted to the West, right? We are all attracted to the guitar, to all the Western instruments and Western way of doing things. I too was like you. And when I was in IIT, I used to sing Western music. That is Western popular music with a guitar. But then there was a very visionary professor, staff member, who used to organize a whole night of Indian classical music. And we were not interested in this, what is this doing? We'd sit at the back, we'd put our dharis, we'd play cards, we'd go to sleep there. But he planted a seed into me, which is still growing into a massive tree, from which I derive my nutrition, not just for other things, but even for my mathematics. Children, don't think that your studies are different and classical music is different. If you are involved with classical music, you'll find your studies will become much better. Much, 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 much better. So, I'm not becoming a musician, but I'm becoming, I think, better at my subject, better at dealing with people, better at interacting with you. Okay? Sir, your journey is amazing. My second question for you is that you are cycling from Kashmir to Kanyakumari. Can you tell us about some of the challenges you faced in your challenging cycle yatra and how you overcame them? Yeah. See, first of all, I want to tell you that it's not amazing. You can do it. Remember, what you are doing, the amount of potential that you have, you think you have only this much, but actually you have fantastic potential. It's like an iceberg. You know what an iceberg is? You can only see 1/10 of the iceberg above the water, but 9/10 is below. You all are like that. Your potential is like that. You think you have only that 1/10, but actually you have lots more underneath. So that's not amazing, number one. Number two, you said that, how is it that, what's the question exactly? Sorry. Challenges, yeah. Now challenges, what happened was, like when I was cycling down, there were many challenges, obviously, right? Just recently when I was coming from Shahapur to Igatpuri, it was a big challenge crossing the ghats. It was raining lots of traffic. Big trucks passing me by just nearby. And it was quite a challenge. But what you do is,
The classical music which I learned made me say, no, 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 mind, don't go wander here and there. Don't think of what's going to happen. Just keep focusing and keep cycling. So that was one challenge. But along the way, I had many other challenges. In Dabra, I got severe dysentery. My stomach gave way. So I thought that now I'll have to go back. I can't do it. But again, I said, nothing doing mind. Again, my classical music helped. I said, nothing doing, you have to go ahead. You have given a word, pran jai par vachan na jai. Baitho cycle pe. Cycle pe, I took some medicine and I sat on the cycle and went. Then, when I was crossing the Satpura range, my right knee gave way. It started paining very, very, very badly. So I said, now I won't be able to go. I must go back. I said, nothing doing mind. You have to keep going. You have given a word. Again, pran jai par vachan na jai. Took some medicine, again moved on. So my dear students, in your life you will always have challenges. But don't feel afraid of challenges. That's part of life. The bigger the challenge, the more effort you have to make and the more reward you will get. If you can jump this high, then jumping this high is nothing. So the more the challenge, if you can face, then in life you will get many challenges from this, different heights. But if you can hit that one, then all these other challenges will seem nothing. You will be able to go through them very easily. So, you're constantly made to raise the bar of the challenge. Here also, one is trying to raise the bar. Many days you'll find, like I found, I didn't want to go, oh, it's so tiring. It's not good weather. I don't want to go. I want to sleep more today. But no, mind, get up. You have to move it. Sit on the cycle and move. So the cycling is not important. The more important thing is to get your mind to say, look, you have to do something. Whatever it might be. I'm doing cycling right now, but that is not the be-all and end-all. Whatever you take up, you have to say, look, I'm going to do it. And I'm going to do it irrespective of how difficult the challenge is. Right? Great. सिर्फ why cycle only? साइकिल ही क्यों चूज किया फिर? साइकिलिंग को इसलिए चूज किया कि देखो क्या है, आजकल अगर हम किसी भी बात के बारे में बातचीत करेंगे, हम कहेंगे शास्त्रीय संगीत बहुत बड़ी चीज़ है, शास्त्रीय नृत्य बहुत बड़ी चीज़ है. सबके हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात, हाँ हम समझते हैं ठीक है बस. पर उसको कैसे पकड़ा जाए? जो गहरी चीज़ हैं, जो अंदर दिखाई नहीं देती, उसको कैसे पकड़ा जाए? कुछ चीज़ बाहर से दिखानी पड़ेगी, है ना? तो बाहर से क्या दिखाओगे? हमने कहा अगर साइकिल करेंगे तो आप जैसे बच्चे पूछेंगे, भाई ये 74 साल का आदमी कैसे साइकिल कर रहा है, ज़रा देखें तो सही कैसा आदमी है. हाँ, मीडिया भी कहेगी देखो देखें तो सही कौन है जो साइकिल कर रहा है. एज यू सेड अमेजिंग, अमेजिंग, हाँ अमेजिंग है, अमेजिंग दिखाई देता है, अंदर जो है वो अमेजिंग नहीं दिखाई देता. तो जितना भी तुम अंदर करो अमेजिंग नहीं दिखाई देता. तो बाहर का अमेजिंग दिखाना पड़ता है अंदर खींचने के लिए, अमेजिंग दिखाने के लिए. इसलिए साइकिल इस्तेमाल करिए. Sir, salute to your focus, determination and your thoughts. In the journey to explore art and culture, you've been very fortunate.
to meet legends like Pandit Birju Maharaj ji, Ustad Bismillah Khan ji, Ustad Zakir Hussain ji, Pandit Hari Prasad Chaurasia ji, and many more. Please share any memorable experiences with any one of your favorite artists. देखो क्या है बच्चों, हम सोचते हैं, हम सब खुश होना चाहते हैं ना, तो हम खुश होने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। हम सोचते हैं कि हमें बहुत पैसा में होगा तो हम खुश होंगे, तो हम क्या करते हैं, हम बहुत पढ़ाई करते हैं, और पढ़ाई के लिए नहीं करते, पर करते हैं हम किस तरह हम इंजीनियरिंग में चले जाएं, किस तरह हम मेडिसिन में चले जाएं, किस तरह, क्यों, उसमें बहुत पैसा मिलेगा, हमको पैसा मिलेगा तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक गाड़ी खरीद सकते हैं, हम सेशल्स, बरम्यूडा, सिंगापुर वहाँ जा सकते हैं, तो हम खुश होंगे। ये सोच समझ के हम पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, क्या, किस लिए, पैसे जुगाड़ करने के लिए, ठीक है ना। पर ये जो नाम तुमने लिए हैं, इन्होंने देखा कि भाई पैसे जो हैं वो हैं, ज़रूरी हैं, हम नहीं कह रहे पैसे ज़रूरी नहीं है, परंतु पैसे, इतना ही पैसे की ज़रूरत है जितना आपको ज़रूरत है, ठीक है ना। उसके बाद देखो क्या होता है, अगर आपने एक बार हॉलीडे चले गए सिंगापुर, अगली बार कहोगे, थोड़े दिन के लिए जाओगे, खुश होगे, उसके बाद बोर हो जाओगे, हमें वापस नासिक जाना है, तो फिर तुम बोलते, नेक्स्ट टाइम बोलोगे हमें न्यूयॉर्क जाना है, तो न्यूयॉर्क गए, बहुत कुछ देखा, थोड़े दिन खुश हुए, अब वापस नासिक जाना है, ठीक है ना। आप देखोगे ये सारी जो चीज़ें हैं आपको खुशी दे सकती हैं, परंतु थोड़े छोटे समय के लिए, ज़्यादा समय के लिए नहीं। तो ये जो आपने नाम बताए हैं ना, इन्होंने ये समझ लिया और ने कहा कि कुछ ना कुछ तो होगा जिससे हमें खुशी ज़्यादा समय के लिए मिल सकती है। तो उन्होंने, हमारे जो पूर्वजों ने दिया है, उसको थोड़ा अच्छी तरह गैर के साथ समझा और अपनाया, ठीक है ना। अब इनके बारे में जो तुमने बताया है, इन एक दो उदाहरण दूंगा, ठीक है। मैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के घर गया, कहाँ, वाराणसी में, और वो कहाँ रहते थे, छत पे, एक छोटी सी बरसाती थी, कोई एयर कंडीशनिंग नहीं था उसमें, तपती हुई धूप, वाराणसी में बहुत गर्मी होती है, तपती हुई धूप, एक छोटा सा कमरा, बाहर बैठे हैं ऐसे तख्त पे, लकड़ी वाले तख्त पे, कोई ऐसे सोफा वोफा कुछ नहीं, और अपने कच्चे में बैठे हैं। उन्होंने कहा, ऐसे मेरे साथ बातचीत कर रहे थे, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, पता है किरण एक दिन क्या हुआ, तो मैंने कहा बताइए। तो मैं गंगा के किनारे शहनाई बजा रहा था और गंगा माई आई और कहा क्या स्वर लगाया, और गायब हो गई। और मुझे नहीं पता क्या उन्होंने देखा, पर उनकी आंखें ना जैसे ट्यूबलाइट जैसे हो गई, ऐसे बल्ब जैसे, और उनकी आंखों में ऐसे कभी नहीं लगा कि उनके पास BMW नहीं है, हवाई जहाज नहीं है, एक बड़ा मकान नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं था। तो हमने ऐसे कई जो ये देखे हैं, ये ना मिनिमलिस्ट थे। मिनिमलिस्ट मतलब बहुत कम चीज़ों के साथ बहुत ऊपर चले गए। हमारे देश में ना क्या कहा गया है, जो सबसे, देखिए महात्मा गांधी को देख लो, महात्मा गांधी क्या पहनते थे, एक लंगोट, है ना, और उनके पास क्या वर्ल्डली पोजीशंस थे, कुछ नहीं, परंतु वो कोई दुखी थे नहीं, बहुत आनंदित थे। क्यों? उन्होंने वो चीज पकड़ ली, अंदर वाली चीज। बाहर वाली चीज तो
सब पकड़ लेते हैं, पर अंदर वाली चीज़ पकड़ना बहुत मुश्किल है। तो ये जो नाम आपने दिए हैं, इन्होंने अंदर की चीज़ को पकड़ा है और उससे वो खुशी, वो आनंद पाया है, और उसके वजह से उनको सेशल्स नहीं जाना पड़ा, बरमुडिया नहीं जाना पड़ा, BMW नहीं लेना पड़ा, है ना। तो हम कह रहे हैं आपको दोनों चीज़ का ध्यान देना है, बाहर की चीज़ों का भी ध्यान देना, हम ये नहीं कह रहे, पर जो आजकल हो गया है केवल बाहर की चीज़, केवल बाहर की चीज़, केवल बाहर की चीज़, वो नहीं होना है। आपको थोड़ा समय अपने ट्यूबलाइट, अपने सर्च लाइट अंदर डाल देनी है, समझे। एक हमारे पता है बहुत अच्छा, माँ दुर्गा का नाम सुना है ना आपने? हाँ, तो दुर्गा का एक नाम है साताक्षी। साताक्षी, साताक्षी का मतलब 100 आइड गॉडेस, 100 आइज। तो मैं हमेशा कहता हूँ वो तो 2 आइज तो बाहर देखने के लिए हैं, पर 98 आइज अंदर देखने के लिए। ठीक है ना? नो, डोंट क्लैप, नो क्लैपिंग। आई टेल यू व्हाई नो क्लैपिंग। यू नो व्हाई? बिकॉज क्लैपिंग डज खड़ 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 खड़। यू नो व्हाट उस्ताद बिस्मिल्लाह खान यूज्ड टू से? आजकल वाह वाह करवाने वाले बहुत हो गए, वो ताली बजाने वाले, पर निकलवाने वाले गिने चुने रह गए। तो आई एम ट्राइंग टू टेक आउट योर नॉट योर वाह वाह. Okay? So no clapping during my session. Even if you don't get the at least don't say wah wah. Okay? I may not succeed in taking out your but at least don't make me succeed in making your wah wah. Okay? All right. आता है, आपने जो लेजेंड अलग अलग पूरे इंडिया के स्कूल में आप भेजते हो, जैसे कमाल साबरे जी आप यहाँ आए थे तो सब बच्चों के मुंह से सिर्फ ही आया था. Sir, your thoughts matter a lot to us. Your thoughts matter a lot to us. Sir, it is said that today's generation is not aware of the Indian culture and heritage. But in all schools, everything related to arts is counted as extracurricular activities. We are happy to share that in our school, we learn classical singing, Kathak and Tabla in our core curriculum. Now we know and understand ragas and alankas quite well. Also, every year, we perform in Swarankur, which is a cultural fest of our school, under the guidance of our mentors, Deepa Didi, Omkar Bhaiya and Jnaneshwar Kasar Bhaiya. So, please guide us on how do we take this cultural legacy forward. See, it's very good to do Kathak, very good to do classical music. Hello. Whatever your school is doing, it's doing wonderfully. But remember one thing, that again, what you're doing outside is just the tip of the iceberg, I repeat. The real thing will be, if you do a little bit of thinking, chintan manan jise kehte hain. Don't always just do it, that's all. Also think, why are we doing it? What is the reason for this? You know, we talk of our Indian culture, हम कहते हैं इंडियन कल्चर बहुत ग्रेट है, ये है वो है, पर कितनों को समझ है क्या ग्रेटनेस है इसमें? हम ये नहीं कह रहे आपको खट से पता चल जाएगा, पर थोड़ा थोड़ा समय, 5%. Why is Deepa ji teaching you Kathak? Why is the school Sachin ji making such an emphasis to you learn Kathak? Why can't we do break dance? Why can't we do Prabhu Deva's, Michael Jackson's break dance? Why not? There's nothing wrong. They're also experts. There's nothing, like what Prabhu Deva does is not easy to do. A lot of practice is required. But what is the difference between what he does and what, say, what a Birju Maharaj ji does? What's the difference? Right? You have to think about that. What Prabhu Deva does, see, my dear students, what you see, all that you see is only 7% of what exists. 93%
of what exists you cannot see. You know, can you see a black hole? No. There are millions of black holes in the universe. So many things. COVID virus, can you see with your naked eye? It brought the whole world to its knees, didn't it? So what I'm trying to tell you is 93%, I'm not saying something original, 93% of matter and energy in the universe you cannot see. Right? Prabhu Deva operates in the 7%. Birju Maharaj Ji operates in the 93%. Wow. You understand? Both are important. I'm not saying Prabhu Deva, what he does is not good. He's very good. Very, very pakka. What Michael Jackson does is very good. No doubt. But he's operating in the 7%. And Birju Maharaj Ji in the 93%. कल आपने वो जो बात कही थी कि कंसंट्रेशन, क्लासिकल म्यूजिक और कंसंट्रेशन का वो जो कल हम डिस्कस कर, वो थोड़ा मेरे ख्याल से बच्चों को और अब बताए तो और अच्छा होगा. नहीं देखिए, अभी जो तुमने गाया पहले क्या लगाया आपने? सबने बच्चों ने क्या बोला? सा बोला था ना? क्यों? पहले सीधा गाना गाते थे. अगर आप बॉलीवुड गाने गाए सुनेंगे तो पहले कभी बोलते हैं सा, बोलेंगे नहीं, सीधा गाना गाएंगे. ठीक है ना? अरिजीत सिंह, गुरदास सिंह मान, वो कभी आ तो नहीं बोलेंगे. आप प्रैक्टिस में तो बोलेंगे, पर अपने कॉन्सर्ट में तो नहीं बोलेंगे ना. पर आपने कॉन्सर्ट में क्यों बोला? क्योंकि हमने कहा पहले ही आपने बता दिया कि जो हम कर रहे हैं पहले ध्यान लगा रहे हैं. ठीक है ना? हम एक गाना नहीं गा रहे, हम एक ध्यान लगा रहे हैं. समझ आ गई बात? तो ये जो चीज़ है हमारी शास्त्रीय संगीत, हमारे शास्त्रीय नृत्य, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसमें ध्यान. आपका ध्यान बिल्कुल एकाग्र होना है. तो सा जब आप लगाओगे तो सा नहीं, सा, आपका मन और सा जुड़ा हुआ है. अगर आपका सा हिलेगा, इसका मतलब है आपका मन हिल रहा है. जैसे आप सा लगाते जाओगे आपका मन कॉन्सेंट्रेटेड होता जाएगा और आपका सा फर्स्ट क्लास लगता जाएगा. ये आइडिया है. समझ आ गई बात? तो कंसंट्रेशन सबसे बड़ी चीज़ है हमारे शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य में. कथक में भी आप देखोगे कैसे सिंपली चीज़ें वो लोग करते हैं ताकि आपका कंसंट्रेशन बिल्ड हो जाए. आप जब कथक करते हो तो आप लेफ्ट राइट नहीं करते. आप क्या करते हैं? लेफ्ट राइट और उसके बाद राइट लेफ्ट, उसके बाद लेफ्ट राइट. क्यों? वो भी तो कंसंट्रेशन बनाने के लिए. समझ आया? तो बहुत गहरी चीज़ है. सबको सोच विचार करना है क्यों कर रहे हैं और क्यों. आपको देखिए, ये आपको डिसाइड करना है. आपके स्कूल ने तो डिसाइड कर लिया बहुत अच्छी तरह, पर आपके मन में क्यों स्कूल कर रहा है हमारे कथक, क्यों नहीं प्रभु देवा को ला रहा है, ये सोच विचार होना चाहिए. थिंक अ लिटिल बिट व्हाई and how it will help you. That's very important. Okay? Sir, we will always look for your valuable guidance in every answer. Sir, we would like to be volunteers for SPIC MACAY and organize the overnight musical concert in our school. Please guide us on how to make this dream possible. First of all, you have to set up a WhatsApp group. Okay? In which you'll make your school name, SPIC MACAY, right? And your school name, comma, Nashik. You understand? That's the first thing. First of all, you must understand what is happening not just here, many parts of the world. We are doing programs in Stanford University, top universities in the world, Columbia University, Cornell. Just a few days back we had in Leiden, Germany. So
Chapters are existing so many places. Before you build anything, you have to build it brick by brick, isn't it? So first step is to set up a group here who will understand why we are doing the overnight. What is the idea of the overnight? You must understand why you are doing an overnight, right? Why should you do an overnight? Tell me, you tell me. Why shouldn't we just have program? Why should we do an overnight? What is the idea? You are asking me, you are saying you must do an overnight. So, you must understand why we should do an overnight. Right? So you have to explain to me why you want me to do, why do you want to do an overnight? I think that overnight is what makes the program so special, because it won't be common. And So anything that's special, which is not normal, I should do. Am I right? Anything that is not normal, I want to just move my head. Not normal, but I should do it. You have to think why you want to. legends आएंगे, continuous legend आएंगे और हाँ. You see, the concept of an overnight is very important for you again to think. क्यों करवाना चाहते हैं? कॉन्सेप्ट क्या होता है? देखो, पहला आर्टिस्ट आता है तो क्या करता है? आपका जो मन जो जा रहा है, धूम 1, धूम 2, धूम 240, अरिजीत सिंह के पास, इधर धूम धाम धाम धूम. पहला आर्टिस्ट क्या करता है? जब बैठता है गाता है, इतने में ले आता है. जब दूसरा आर्टिस्ट आता है तब इतने से शुरुआत होती है उसकी. तुम्हारा मन जो है ऐसे इतने में, वो इतने में ले आते हैं. तीसरा आर्टिस्ट जो आता है इतने में ले आता है. और जो ब्रह्म मुहूर्त में आता है 3 बजे से 4 बजे, वो आपका कंसंट्रेशन ऐसे हो जाता है. और जो लास्ट वाला आर्टिस्ट आता है ना, उसमें जो आनंद आता है, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन बिल्कुल ऐसे हो गया है, तो क्या है, जो आनंद उसमें आएगा लास्ट वाले आर्टिस्ट में, उसका कोई जवाब ही नहीं. इसके वजह से आपको करना है, नॉट बिकॉज इट्स अ स्पेशल थिंग. आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस द आनंद ऑफ द ब्रह्म मुहूर्त. इट्स नॉट समथिंग विच इज जस्ट लाइक दैट. Our ancestors have experimented very, 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 very deeply and said that at 3 o'clock, between 3 and 4, round about 4 o'clock, your concentration becomes wonderful. That's why all of you should get up early and study. Yes. Not study late like most students do nowadays. You study late, get up late. Now, if you want to really do well, get up early. Get up at Brahma Muhurat and then study, and you see what you will be able to study. So this is the reason for doing an overnight, not to do a special program. Do you understand? You must understand all these, then we'll do the program. Is it right? यस. जस्ट बच्चों में बताता हूँ, जब किरण जी नासिक आने वाले तो उनका शेड्यूल आया, तो उस शेड्यूल में अभी मुझे समझा ब्रह्म मुहूर्त का वो टाइम 3 बजे उठना, 4 बजे उनका पूरा शेड्यूल आया था. तो मैं बोला 4 बजे, और मेरे साथ कुटीर में ही घर में रह रहे, तो बराबर 4 बजे का धुन मुझे सुनाई दी. और तो डेली उनका शेड्यूल 3 या 4 बजे चालू होता है. सो इट्स ग्रेट. पर आज मैं नहीं उठ पाया. सच बात बताऊं, बहुत थक गया था. कल का वो पता है, वहाँ से जो शाहपुर से इगतपुरी जो था, वो वॉज अ टफी. सच में आपने क्या, व्हाट डिफिकल्टीज आई फेस. आफ्टर दैट टुडे आई फेल्ट लाइक स्लीपिंग, बट स्टिल आई गॉट माई सेल्फ अप, नॉट एट 4 o'clock, बट एज आई यूजुअली डू. आई गॉट अप मच मच लेटर. ठीक है? आई एम नॉट सेइंग आई एम सुपर ह्यूमन. आई एम ऑल्सो लर्निंग. I am trying to learn. I am also trying to figure out what this beautiful thing our ancestors have given us.
Sir, the information and the knowledge you have given us has really enlightened us. Sir, you are an IITian and a math professor, but what is your take on math phobia in students? In our school, we have connected math with music for easy understanding, like setting tunes for learning math tables. So, what is your opinion on math with music, and can you share some tricks to make math easy for our students? See, anything which is abstract will be difficult. Remember, children, mathematics is the language of the gods. It really is. All of you must learn mathematics because it is the language of the gods. It is. What happens is, to learn the language of the gods will be tough. So what you have to do is, just like everything else, you have to struggle. You have to keep raising the bar. क्या होता है? If you want to do maths well, or want to do any subject well, and especially maths, you will find that you'll have to make your concentration like a laser beam. So you have to practice concentration. How? Through classical music, through classical dance, through yoga and meditation. All these techniques which have been given to us will help you become very good in all the subjects that you are doing, and especially maths. You will see many mathematicians and physicists have been involved with classical music. You know, our ex-president Abdul Kalam ji, he used to play the Saraswati Veena. You know, the Dr. C.V. Raman, the great physicist of our country who got the Nobel Prize, he was very, 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 very good. He did a lot of research work on the sound of the Veena. You know, the current top mathematician of the world, one of the top mathematicians of the world, his name is Professor Manjul Bhargav. He's from Princeton University. He is got the Fields Medal, the topmost medal in mathematics. He's a concert playing Indian classical musician. He says, when I get stuck in mathematics, I go to my classical music. When I get stuck in classical music, I go to my mathematics. So that's the connection. It's not a very, it's an abstract connection. But there is definitely a connection. So कल आप शेयर कर रहे थे, एक स्टूडेंट था IITian टॉपर था, और वो म्यूज़िक की वजह से मतलब कोई क्लास नहीं लगाया था. वो थोड़ा बच्चों को मेरे ख्याल से बहुत इम्पोर्टेंट होगा. तो देयर वाज वन, मैं IIT कानपुर गया था और वहाँ मैं एक स्टूडेंट के साथ मिला. उसकी आंखें बहुत ब्राइट थी. तो मैंने स्टूडेंट से पूछा, भाई तुमने कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया या IIT में आने के लिए? तो उसने कहा, सर मैंने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन किया. तो मैंने कहा, तुम्हारा कौन सा अटेम्प्ट है? सर मेरा पहला अटेम्प्ट है. तो मैंने कहा, तुमने ये कैसे कर दिया? तो उसने कहा, मेरा स्कूल. तो मैंने, कौन सा स्कूल था? उसने कहा, एक छोटा सा स्कूल, बहुत छोटा स्कूल, 24 परगनास का नाम ले लिया. तो मैंने कहा, क्या था स्पेशल तुम्हारे स्कूल में? तो कहता था, जो हमारा मोटो था स्कूल का, वो था टू टीच द चाइल्ड हाउ टू कॉन्सेंट्रेट. तो मैंने कहा, कैसे करवाते थे वो? तो कहते, हर सुबह सारे स्कूल को आधे घंटे के लिए योग करना पड़ता था. तो मैंने कहा, वो तो भाई कई स्कूल करवाते हैं, ऐसी क्या बड़ी बात है? उसने कहा, नहीं सर, वैसा नहीं जैसे और स्कूल करवाते हैं, जहाँ एक PT इंस्ट्रक्टर को 6 महीने क्रैश कोर्स के लिए भेज देते हैं, वो वापस आके पढ़ाता है, या तो तुम PT कर लो या तो योगा कर लो. वो जो करवाते थे, इट वॉज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन माई माइंड. My mind, which was running helter-skelter like a mad monkey, he brought it within this limits. So I said, then what happened? Then he said, at the end of the school, the whole school had to do 1 hour of Indian classical music. उससे क्या हुआ
मेरा मन जो इतने में था, it came like this, like this, like this, became like a laser beam. So when I took my book to study, my mind didn't go to the new eating joint in Nasik. It didn't go to the, to the lovely dress I saw there. It didn't go to the lovely car I saw there. We went straight to where I was studying. And what I could do in 15-20 minutes, others took many hours to do. I did not have to go to any coach. So we can learn from that. Sir, you make studies sound so easy. So my last question for you is that we came to know that you are inspired by Gandhiji, and our school philosophy is greatly inspired by Nai Talim. Sir, nowadays cycling enthusiasts prefer fancy cycles with gears and many features, but you are on a simple bicycle for your challenging cycle yatra, which is an ideal way of spreading Gandhiji's message of simple living and high thinking. Please share more details about your thoughts on this challenging cycle yatra. See, my friends, if you have a 10-gear bicycle or 7-gear bicycle, tell me truthfully, how many gears do you actually use when you're cycling? Truthfully. You will find, yes, tell me, how many gears? 2 gears. 2, that's all. What are the remaining 7 gears doing? Or 9, 8 gears doing? Nothing. If you're going for a race, I can understand. But if you're buying at 8, 10, whatever, 15, 20 gear bike, it's just for show off because you're not using it. What is the 2 gears that I have? One is a normal gear, the second gear which I say, get off the cycle, pull it up. What's the problem? So you have the 2 gears with you. One is the ordinary gear, which is cycling. One you get off and pull the bike up. Like when I came, for example, to Igatpuri, I had to get off the cycle. I couldn't climb up the cycle on the ghats. So what I'm trying to point out to you is, you're making the cycle more complicated, more expensive, increasing the carbon footprint, right? Because more things you have to manufacture means increasing the carbon footprint. Also, you'll find that the stability of your cycle is very, very, very delicate. Very thin tires. I've got a thick tire, so my stability is much more. The chances of anything going wrong with the cycle is much less because you've got many less moving parts. Here you've got many other gears, this gear, that gear, gear shifting mechanism. I'll give you an example. I was coming to Panvel from Lonavala. So it's very downhill, very downhill. It's again Ghat region. So there were 2 other cyclists who said they want to come with me. I said, okay, you come. So what happened, when we were coming down, the one with the fancy gears, his cycle broke down. He had to get it all repaired because the gears were so delicate, they couldn't take it. I came down aram se, and I reached the location where we had to reach much before him. It's like the story of the hare and the tortoise. Have you heard of that? Yes. It was like that. So you know what? You don't require fancy things. You can have the less number of moving parts, the more reliability is there of the cycle. And also one more thing, it also requires more effort. And why should you not put more effort? It raises the bar. What you're saying is you want to raise the bar, na? If you raise the bar, then this bar becomes very easy. Correct? So I'm continuously also trying to raise the bar. Do you understand what I'm saying? So this also helps me with that. So it helps in many, many, many ways to have a simple bike and live life simply. ग्रेट, बहुत ही बढ़िया. ऐसा लग रहा है कि इंटरव्यू चलनी ही चाहिए, पर हमें टाइम का भी लिमिट है, आगे की भी बहुत
आपके 2 सेशंस प्लान है. सो थैंक यू सो मच किरण जी, आप यहाँ पे आए. आगे की यात्रा के लिए बहुत सारे शुभकामनाएं हम देंगे आपको, और हम जल्दी ही नासिक का चैप्टर्स हम एक्टिव करेंगे और आपको हम जल्दी बुलाएंगे उसका इनॉग्रेशन के लिए और पूरा फंक्शन करने. दीपा दीदी कहाँ पे है? दीपा दीदी, नागेश्वर भैया, यस, हाँ, हम कमिटमेंट करें. यस, तो हम जल्दी करेंगे. थैंक यू. यस, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू. जोरदार हम तालियों के साथ उनको नेक्स्ट जर्नी के लिए शुभकामनाएं देते हैं.